and fitness has got lot of myths around it. You're not supposed to do exercises in pregnancy because you might have miscarriage. It might lead to produce lot of heat in your body. You are not supposed to do any form of workout for first 3 months of your pregnancy. These all are the myths. First of all, understand if there is a medical complications, yes, you need to follow the guideline that's provided by your doctor. If everything is going smooth, everything is normal, exactly from your 2nd month of pregnancy, you need to start exercises. There are a lot of things you must have heard, no? Acidity is common, leg cramps are common, lower abdomen pain is common in pregnancy. If you are very regular on exercise, you will realize the smoothness with which your pregnancy goes ahead. In this particular video, we are going to learn those exercises which you need to do and you must do from the day you conceive, or rather I'll say after 40 days of you conceiving till the day you deliver. Why I said from the day you conceive? If you are a kind of a girl who have been very regular on exercises, you can continue your exercises even once you conceive, just with few changes. In case you wish to know that which are the new exercises that I can get started, then these are the ones. So I'm showing you all the exercises. First exercise is toe walk. So you need to get on your toes and then walk. Again, it's a toe walk. This will increase lot of blood circulation towards your calves and you will not have leg cramps. Okay. Next is heel walk. See, एक बात ध्यान में रखना, there are no shortcuts to fitness. If you want to feel fit in your pregnancy, तो फिर exercise करना जरूरी है, rather mandatory है. And nobody should say that I'm not having that much time. You all can take out 20 minutes of time from your 24 hours and do your exercises. So walk on your heel. And third is on your sides. एक बार सामने से दिखाती हूँ, it's this. And you're supposed to walk on your sides. How much you're supposed to walk? If it's a length of this particular mat, 5 rounds on your toes, 5 rounds on your heels and 5 rounds on your sides. Next exercise. Writing name with your hips. See, pelvic bone is a bone which bear lot of responsibility towards developing child. अगर ये हिस्सा हिलते रहेगा तो automatically उस जगह पे blood circulation बहुत अच्छा रहेगा. So how we can do this? आपको हिप से नाम लिखना है. जैसे मेरा नाम है श्रेया, so I have to write it in capital letters. जमीन को पेपर बना के, so it goes S H R R E Y and A. श्रेया बस एक ही नाम लिख रहा है? नो. आइडियली यू राइट खुद का नाम, खुद के हस्बैंड का नाम, अगर आपको पहला एक बच्चा है तो उसका नाम, या ये दो ही नाम 3 to 4 times. इन फर्स्ट 3 months ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा. बीच के 3 महीने इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ क्रैम्प्स. पेट में कहीं पे अगर क्रैम्प आते हैं तो, और आखिरी 3 महीने में एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू गेट बेबी इन टू राइट पोजिशन. बच्चा कहीं पे अटक ना जाए, बच्चे को नीचे लाने के लिए, बच्चे का हेड लॉक करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स. तो ये वाला एक्सरसाइज हिप से नाम लिखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड एक्सरसाइज, आपको ये एक्सरसाइज अगर आप प्रेग्नेंट हो तो किसी का हाथ पकड़ के करना है. आई एम नॉट प्रेग्नेंट, सो आई एम शोइंग यू ऑल फ्री. अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप दीवार को पकड़ के या विंडो को पकड़ के भी एक्सरसाइज कर सकते हो. दोनों हील को ज्वाइन करना है. इट्स लाइक कथक पोजिशन. हाथ किसी के हाथ में पकड़े हुए या किसी ग्रिल या खिड़की को पकड़े हुए. यू लिफ्ट योर हील्स अप एंड गो डाउन एंड यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. हील्स अभी भी ऊपर. यू कम अप एंड हील्स जमीन पे. वापस एक बार हील्स उठाओ. गो डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऊपर एंड नीचे. हर एक्सरसाइज कितनी बार करना है? टू गेट स्टार्टेड विथ हर एक्सरसाइज 3 से 5 बार. स्लोली बढ़ाते बढ़ाते हर एक्सरसाइज एटलीस्ट 10-10 बार हो जाना चाहिए.
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको बैठ के करना है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको बाथरूम की जगह को अंदर खींचना है. इन अ मॉडर्नाइज्ड टर्म इट्स कॉल्ड एज कीगल्स. इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक लैंग्वेज इट्स कॉल्ड एज मूलबंध. सो यू जस्ट सिट, बाथरूम की जगह को अंदर खींचो एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. See, those who wish to understand it from an English language point of view, visualize as if you're urinating and you stop it in between. Then which are the muscles that you're going to pull? You pull inside those muscles, count 1 to 10 and then you release. So this particular exercise 10 times you need to do. Next exercise which will play a very crucial role is Manjurasana. It's a camel and cat. You take your position. Please don't treat your pregnancy as a pampering one. So these exercises will not harm. They will do a lot of benefit to your pregnancy. So please do it every day. So take your positions. You look up, back down. You look down, back up. What should not happen is swinging of your hips. So there are a lot of girls who keep moving this, which is not right. You stay steady. Once you are steady, then you will be doing this exercise. You take the position. ऊपर देखो, बैक नीचे, नीचे देखो, बैक ऊपर. Count 1 to 10. Look up, back down. Count 1 to 10. Look down, back up. Count 1 to 10. This exercise will make you feel very good at your back. Next exercise, which is again very important in pregnancy. योगिक लैंग्वेज में भी बहुत ज़रूरी है, मॉडर्नाइज लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी. इट्स कॉल्ड एज बटरफ्लाई और बद्ध कोणासन. एंड यू मूव. इससे बहुत ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है टूवर्ड्स योर वजाइना, योर लोअर एब्डोमेन, टूवर्ड्स योर यूट्रस. ये आपके थाइस को रिलीज करता है फ्रॉम द प्रेशर, फ्रॉम द क्रैम्स और एनीथिंग दैट इट्स फेसिंग. सो इट एक्चुअली हेल्प्स. कितने काउंट के लिए करना है? 30 to 60 काउंट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज, सपोज टू लाई डाउन. दोनों पाँव फोल्ड, हाथ साइड में एंड लिफ्ट योर हिप्स अप एंड वेट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नीचे जाने के बाद वापस बाथरूम की जगह को अंदर खींचो एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस हिप्स ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हिप्स डाउन, बाथरूम की जगह को अंदर खींचो and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next exercise which is called as पवन मुक्तासन. सिर्फ पेट बीच में खाली होना चाहिए, दोनों पाँव साइड में. एंड यू हग योर लेग्स. प्लीज पाँव को ऐसे हवा में मत पकड़ के रखो. यू हग योर लेग्स. दिस अ वेरी गुड एक्सरसाइज जिससे आपके बैक को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा. एंड यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Release. So इस एक्सरसाइज से you will feel very good. Now last part of exercises. ये पर्टिकुलर जो लास्ट पार्ट है ये आप प्रिफरेबली पहले 2 महीने नहीं करना. फ्रॉम 3rd month you can get started. This is called as सूर्य नमस्कार. But we are learning pregnancy special सूर्य नमस्कार. So how you can do this? आपको चैंटिंग के साथ करना है, नहीं करना, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. बट आई विल बी टीचिंग यू विथ चैंटिंग. You can do chanting, you can do plain omkar also. So you have to do with plain omkar. It goes One, 2, a forward bend, पेट दोनों पाँव के बीच में and you stretch. 3, cat. 4, mountain. 5, cat. 6 and 7. If anybody has got knee problem, you need not stand up on knees. You can do same thing sitting in Vajrasana or the Namaz position. Now, if any one of you know the chantings of Surya Namaskar, please do it with those chants. One of the best thing that you can give to yourself in pregnancy is getting the energy from the source, that's sun. Exactly there in front of my eyes too. So I'll be
telling the first chant, it's basically Om Mitraya Namaha. So you go Om Mitraya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Can't explain you what does it make you feel. What time you're supposed to do these exercises? Anytime, either morning or evening. There should be a minimum 45 minutes of gap between you eating and you doing your exercises. If any one of you says, Shreya, I've got a lot of work, I'm a working woman, I'm not able to manage exercises, please delete this thought. Pregnancy doesn't come on an average every year in your life. It comes once in a lifetime. And if you can't enjoy it, it doesn't make sense. If you are regular on exercises, you will realize that you are able to go through your pregnancy with lot of smoothness. Apart from this, what you're supposed to do, you're supposed to be very regular on pranayama and meditation. There's another video about it on my Dvija YouTube channel. So breathing exercises needs to be done in pregnancy. So be fit, be regular on exercises and enjoy your pregnancy. Thank you and bye.